everyone. Welcome once again to the JIEH online classes. In today's physics class, we are going to read about capacity and capacitors. Okay. So guys, before going into the topic, let me discuss what does this capacity means. When I am saying the capacity, suppose for example when I'm saying the capacity of a water bottle, water bottle capacity then it is a measure of how much water it can hold. तो से bottle भितर केते water रही परिबो, that is the capacity of that water bottle. So when I am saying the capacity of a water bottle, it is measured in liters. Similarly, when I am saying the capacity of a conductor, it is measured by the amount of charge it can store. केते charge केते amount रो charge रखि परिबो से ताकू नै कि capacity describe हुए गोटे कंडक्टर रो. तो सिमिलरली तो जेमिति हम वाटर बॉटल को एनालॉग करके आपको पढिले कैपेसिटी टा कोन सेमिति देखिबा जदी कैपेसिटर, द वर्ड कैपेसिटर मींस इट इज अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस. दिस डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज. ओके, सो कैपेसिटी इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज. चार्ज टा को स्टोर करबा को गोटे डिवाइस यूज करा हुए जा के हम कैपेसिटर कहि करू. तो तुम माने सब देखिथिबो capacitor is used in case of fan, motor and many other electrical appliances. So what is the use of this capacitor in a fan or an electric motor? So generally guys, to start something, to start a suppose electric fan or to start a motor, it needs a high amount of current which is approximately equal to 25 ampere to 30 ampere. 25 to 30 ampere is very high. हाई माने एटा न जे 100 एम्पियर की 200 एम्पियर. 25 एम्पियर और 30 एम्पियर इज इटसेल्फ इज वेरी हाई. बुझि परलो. तो ए जो स्टोर चार्ज टा को स्टोर करबा फल रे दिस कैपेसिटर विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट टू स्टार्ट समथिंग. फॉर एग्जांपल जेमते हम मेकानिक्स रे पढिथिलु, सपोज हम गोटे टेबल टा रेस्ट रे अछि ताको हम मोशन को आनिबा चाहूछु. वी आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन द टेबल सो दैट इट कैन मूव. To start the table moving, आमो कोन करबा पड़छि से टाइम रे सबटो अधिक फोर्स अप्लाई करबा पड़छि सो एज टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन टा को ओवरकम करबा को टेबल ऊपर हमको मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करबा पड़छि. सिमिलरली टू स्टार्ट ए फैन और टू स्टार्ट ए मोटर, हाई अमाउंट ऑफ करंट इज नीडेड. सो दिस डिवाइस which stores capacitor, which stores the charge, provides the required amount of energy so that the appliance can start effectively. Okay, so we know that for a conductor the charge is directly proportional to potential. More the potential, more will be the charge, and jodi charge बढ़ुची ताल potential बढ़िबो, potential बढ़िले charge बढ़िबो. They are proportional to each other, directly proportional to each other. So Q can be written as C into V, where C is a proportionality constant. This is a proportionality constant. Okay, C is a proportionality constant. So C can be defined as Q divided by V. Okay, where Q represents the amount of charge. This is the charge, and this defines the potential difference or the potential. Okay, so here the constant C is named as capacitance. Is the capacitance of the conductor. So whenever we are discussing a physical quantity, we must know about their units and dimension. जतबेला हम गोटे physical quantity विषय पढुछु, then we must know about their units and dimension. So what will be the unit and dimension of this unit and dimension of this capacitance? So C is equal to Q by V. मुदान C is equal to कोन Q by V. तो Q रो यूनिट हला कूलम, V रो यूनिट हला जूल पर कूलम. ना नहीं, V टा को हम केमते रिप्रेजेंट करूछु? V can be represented as, the unit of V can be represented as joule per coulomb, because I can write W is equal to Q into V, W is equal to Q into V, and V is equal to W by Q. So the unit of V is unit of W divided by unit of Q. The unit of W is joule. The unit of W is joule. Here W is the work done. We know that the relation between the work done and the potential is W is equal to Q into V.
So the unit of work done is joule and the unit of charge is coulomb. So the unit of potential is joule per coulomb, which I have used here. तो potential रो unit है joule per coulomb. जदि coulomb टा नहीं कि ऊपर numerator रे multiply होगला तो मते कौन दबो unit of C or capacitance is equal to coulomb square per joule, which is represented by Faraday. बुझ पारलो? तो unit of capacitance is Faraday, which is equivalent to coulomb square per joule. Again, joule can be expressed. So joule can be expressed as, तो मु joule टा कौन लिख पारबे? Joule is equal to Newton into meter, work done, force into displacement. Force रो unit हला कौन? Newton and displacement रो unit हला meter. So joule is equal to Newton into meter. If I will put Newton into meter in place of joule, the unit will be F is equal to कौन होगा? Coulomb square per Newton per meter, that is C to the power 2, n to the power minus 1 and m to the power minus 1. बुझ पारला? I am repeating once again. F is equal to coulomb square per Newton per meter, that is C square per n to the power minus 1, m to the power minus 1. So this is the unit of capacitance. Okay, once we are done with this capacitance, the basics of capacitance, then we will move to something called the capacitance of a parallel plate capacitor. Capacitance गोटे parallel plate capacitor रो capacitance केते होबो से विषय रे हम पढिबा. तो next is the dimension of capacitance. Okay, तो dimension capacitance रो केमिति बाहर करबे? Simple, जहा हम पूर्वरु कोले ना coulomb रो dimension कोन होची मु देखिबी, तारो स्क्वायर नेबी, देन न्यूटन रो कोन dimension होची देखिबी, देन मीटर रो कोन डायमेंशन होची देखिबे, जा जगह तार वैल्यू पुट कर देले मते डायमेंशन मिल जिवो कोन कैपेसिटेंस रो. तो कूलम स्क्वायर रो डायमेंशन कोन? कूलम रो डायमेंशन हला एम्पियर इनटू टाइम ना नहीं काहेकि I इज इक्वल टू जानि छ कोन q by t हला. तो c इज इक्वल टू कूलम इज इक्वल टू कोन होबा एम्पियर इनटू सेकंड. द डायमेंशन फार्मूला यूज्ड फॉर सेकंड इज कैपिटल T टाइम. ओके, तो c इज इक्वल टू at. तो कूलम स्क्वायर जगह रे मु a स्क्वायर t स्क्वायर पुट कर परबी at रो होल स्क्वायर. सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कूलम रो डायमेंशन फार्मूला मिल गला मते. देन फोर्स रो डायमेंशन फार्मूला मु जानि छी, न्यूटन दा यूज होची फोर्स रो यूनिट, तार डायमेंशन फोर्स रो डायमेंशन कोन m l t टू द पावर -2. l t टू द पावर -2 टा हला एक्सेलरेशन रो डायमेंशन, m टा हला मास रो डायमेंशन. मास पाई हम फंडामेंटल क्वांटिटी m यूज करछु. देन l इज द डायमेंशन फॉर मीटर. ओके, तो देखो दस एटा को जदि मु सॉल्व करबी एबे मते कोन मिलबो ना, एठी हेगला a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय m l t टू द पावर -2 l. तो l मल्टीप्लाई के l स्क्वायर हला, ताको जदि न्यूमरेटर को नेबी मते कोन हो l टू द पावर -2 हे जिवो. एठी m टा अछि से न्यूमरेटर को गले m टू द पावर -1 हे गला. देन t टू द पावर -2 टा ऊपर को गला, एठी अछि t टू द पावर 2. तो t to the power 2 plus t to the power 2, t to the power 4 and a to the power 2. So the dimension formula for the capacitance is m to the power -1, l to the power -2, t to the power 4 and a to the power 2. So remember, whenever I am writing a dimension formula, you must follow the order m, l, t, then the rest of the dimension formula. Okay, तो ए ऑर्डर में ही सब बळे लिखिबो. तो आज वी हैव स्टडीड इन केस ऑफ रेजिस्टेंसेस. 10th क्लास रे त माने रेजिस्टेंस विषय रे पढिथिलो है ना. तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस है ना. रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस विषय रे पढिथिलो. सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस इज समथिंग कॉल्ड इलेक्टेंस. ओके, इलेक्टेंस बोली कोआ होची जार डायमेंशन इज just reciprocal of the dimension of the कोन कैपेसिटेंस. जेहेतु हमें कैपेसिटेंस रो डायमेंशन बाहर कर सरले, कैपेसिटेंस रो रेसिप्रोकल टा हमें इलेक्टेंस कहूचे, तो तार डायमेंशन टा कैपेसिटेंस रो डायमेंशन टा कोन हो इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस. बुझ पारलो? तो इलेक्टेंस रो डायमेंशन एटी कोन हो m to the power 1, l to the power 2, t to the power -4 and a to the power -2. Okay, so this was all about the SI unit. This is all about the SI unit, and
the what is capacitor, what is capacitance. This is the introduction class about the capacitance. Okay, so you can also derive the CGS unit. What is the CGS unit of capacitance? CGS unit तम capacitance रो बाहर करि परबो. So this can be done very easily. तमे already जानिचो start volt और start coulomb रो unit रे सब जानिचो. ताको put करके you can find out the CGS unit of capacitance. Okay, this was all about today's class. Thank you.